तो अभी हम स्टार्ट करेंगे MCS 201 पढ़ना। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है, उसके अकॉर्डिंग हमको समझ में आएगा कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल का भी अलग से आएगा और ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द रेस्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ही कंपल्सरी है। ए क्या है, ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड राइट एल्गोरिदम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय अ यूज़र। ओके ओके, बी क्या है, write recursive and iterative code in C to find sum of numbers from 0 to n, where the n is the number entered by the user. What is lambda function? Discuss the utility of lambda function. Write lambda function in Python to calculate the cube of a number entered by a user. What is overloading and overriding in Python? Explain the concepts of call by value and suitable code in C. Briefly discuss the syntax and functionality of map method in Python. Write a function. Okay. C, determine the simple and compound address. What is storage classes? Difference between static variables and dynamic variables. Python differentiates core outer in this. Random access equals. Okay, Python से related question है. Write syntax of various looping control. Also draw flowchart of each exhibit their respective execution in the statement. Write a program in C to copy the content of one file to another file support. Okay, write a program C to verify this is palindrome. Python का क्वेश्चन है, पैकेज ऑफ पाइथन, राइट एन एल्गोरिथम टू स्लो दिस, कंपेयर सी एंड पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इतना तो समझ में आ गया कि थ्योरी भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, थ्योरी लिखना ही पड़ेगा। एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, फिर ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड राइट एल्गोरिदम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। ओके, ब्लॉक 1 में सी, ब्लॉक 1 और 2 में सी से रिलेटेड पढ़ना है, ब्लॉक 3 एंड 4 में पाइथन से रिलेटेड पढ़ना है। अब पहले वाला इसको हम पूरा ही पढ़ेंगे क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डेटा टाइप्स बाद में देखेंगे, अभी हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को करते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड जो कि यूनिट 1 है। यूनिटी में ये यूनिट 1 में जो देख लेते हैं एक बार। Steps for problem solving using computer as a problem solving tool. Basic of algorithm, flow chart। ओके, क्वेश्चन आया था इससे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी, कंपाइलिंग, राइटिंग ऑफ सी प्रोग्राम, कंपाइलिंग, रन लिंक एंड रन द प्रोग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट ऑफ सी एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से जो हम सिंपलेस्ट वे में रखे हुए हैं। व्हाट इज एल्गोरिदम? एन एल्गोरिदम इज जस्ट अ स्टेप बाय स्टेप प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, like a recipe you follow to cook food. An algorithm is a recipe for solving a problem using a computer. Where is it used? Before writing any computer program like C, Python, etc., you first need a clear plan. This plan is called a algorithm. What does it look like? An algorithm is usually written in simple English plus programming style steps. This way of writing is called pseudocode. Okay, example of pseudocode: start, take two number a and b, add a and b, show the result and end. You can later convert this into a language like C, Python, etc. Feature of a good algorithm: finite step, it must end after some steps, clear and simple, easy to understand, language independent, doesn't depend on C, Python, etc. Okay, algorithm efficient, uses less memory and less time, easy to convert into code, can be easily written in C or any language. Final summary: write this in
Okay, an algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem. This is written in pseudo using plain English and programming style. A good algorithm should be simple, efficient, language independent. क्या है feature of good algorithm? Finite step must be, and after some step, clear and simple, language independent, efficient, easy to convert into code. Okay. Feature of a good algorithm. To make a good algorithm, these things should be kept in mind. Understand the problem clearly. First, you must fully understand what the problem is and what result is expected. Only then you can plan the correct step algorithm. Example, if the problem says find the largest number, you must know that the output should be the biggest number. Okay, break the work into small part, modular. Divide the algorithm into small sections like mini tasks. Each section does a small job. This makes it easy to understand and manage. Example, one part adds number, another part checks which is bigger. But don't make it too many small parts, it will becoming confusing. Use clear variable name. Use names that tell the purpose of the value. Example, use day instead of a. So it's clear to store a day's name. It makes the algorithm easy to read and understand. Write helpful comments on no document. Write short note in your algorithm or paragraph to explain what each step does. All tell the user what kind of input is needed and what to do. Example, if your program asks for a numbers between 1 and 10, they clearly say that. वेट इसको फिर से करते हैं. If your program asks for a number between 1 and 10, then clearly say that. Also, if the user gives a wrong input, the user should show a friendly message like please enter a number between 1 to 10. A final easy summary to write in exam. A good algorithm should be clear, well planned, and easy to understand. The problem must be fully understood before designing it. It should be written in small parts, use proper variable name, and should include helpful comments or notes. The algorithm must also guide the user properly and handle wrong inputs nicely. Criteria to be followed by an algorithm. Think of an algorithm as just a set of instructions, like a recipe. For a recipe to be good and reliable, it needs to follow these 5 rules. Input, what you start with, what it means. An algorithm needs starting ingredients or information. It can have zero and more inputs. Simple explanation. Simple explanation, you need things to work with. To make tea, your inputs are tea, leaves, water, milk, and sugar. Without these, you can't start, right? Yes. Criteria to be followed by an algorithm. Input, what you start with. What does it mean? An algorithm needs starting ingredients or information. It can have zero or more inputs. Simple explanation, you need things to work with. To make tea, your inputs are tea, leaves, water, milk, and sugar. Without these, you can't start. Output, what you end up with. What it means, the algorithm must procedure at least one result or outcome. Simple explanation, after following the steps, you must get something. For our tea recipe, the input is a finished cup of tea. A recipe that doesn't result in tea is useless. Definition, clear step. What it means, each step must be crystal clear, precise, and have one meaning. There should be no confusion. Simple explanation, the instruction must be specific. Bad instruction not defined. Pour some water and add a little sugar. How much? It's some and or a little. Good instruction definite. Pour 200 milliliter of water and add 1 teaspoon of sugar. Okay. How it end up?
What is mean? The algorithm must eventually stop after a specific number of steps. It cannot go on forever. Simple explanation: a recipe has a final step. You make the tea and you are done. It doesn't say keep stirring forever. The tea making process is clear beginning and clear end. Effectiveness: the steps are doable. Okay, what it means: each step must be basic and practical enough to understand. Anyone could do it with simple tools, like person with just a pen and paper. Simple explanation: you should actually be able to perform each step. Good instruction: heat the water until it boils. Anyone with stove can do this. Bad instruction: not effective. Heat the water to 5000 degrees Celsius. This is not good practical in a kitchen. Done with the algorithm. Basic of algorithm, feature of algorithm. ओके, क्राइटेरिया टू बी फॉलोड ये भी देख लिया. यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, देखते हैं. लेट अस ट्राई टू डेवलप एन एल्गोरिदम टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स. स्टार्ट, इसको सूडो कोड ऐसे लिख रहे हैं. Start, read two number a and b, calculate the sum of a and b and store it in a sum. Means any variable, we can store it into any variable. Display the value of sum and then stop. Okay, means start, read two number a and b, calculate the sum of a and b and store it in a sum name of any kind of variable. Then display the value of sum, then stop it. Let us try to develop an algorithm to print the average set of data values. Start, क्या बोल रहा है? Compute and print the average of a set of data values. Okay, start, set the sum of the data values and the count to 0. As long as the data values exist, add the next data value to the sum and add 1 to the count. To compute the average, divide the sum by count, display the average and then stop. Write an algorithm to calculate the factorial of a given number, or a number can be input by a user, ये भी हो सकता है. Start, read the number n, variable n. Initialize, I is 1, fact 1. Repeat step 4 times though 6 until I is equal to 6. I is equal to n means 6, yes. And factorial into I plus 1, print the step and then stop. And write algorithm to check whether the number is given is prime or not. Start, read the number num, initialize I 2, flag 1, read step 2, repeat step 4 though 6 until it's I means I is smaller than number or flag equal to 0. Remainder number, this kind of, and then if the 0, okay, condition लग रहा है. If the flag is 0 then print number is not a prime, else 0 का लग गया है तो else the prime number. Top down design, एक बार ये देख लेते हैं क्या है. Functions, task 1, task 2, task 3, task n मतलब n number of task. ठीक है. Solution 1, 2, 3, solution 4, this complex solution. Symmetric breakdown of a problem into subtasks as employed in top down design. Okay, next come to the flowchart. What is flowchart? A flowchart is a graphical picture based representation of an algorithm. Okay,
एल्गोरिदम में क्या हो रहा था कि वहाँ पे सूडो स्टेप्स लिख रहे थे और यहाँ पे फ्लो चार्ट, तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसका, एल्गोरिदम का ही. It shows how a problem will be solved step by step using symbols and arrow to represent actions and the flow of information. Why is flowchart used in programming? It helps to visualize the steps of solving a problem. It shows the flow of information and processing into a clear and simple way. It is created after writing the algorithm to make the logic easier to understand. What does a flowchart include? Symbol. Each symbol represents a specific action like input, output, decision making. Arrow, it shows the direction or flow of a process. ठीक है. Purpose of flowchart क्या है? To provide a clear and visual outline of how a task or problem will be solved, to make it easier for programmers or learners to understand the steps as algorithm. In short, a flowchart is a diagram that shows the steps of algorithm using symbols and arrows. A flowchart is a diagram that shows the step of an algorithm, shows the steps of the algorithm using symbols and arrows, helping us understand the logic of a problem more easily. Okay. देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से है. Okay, so basic symbol used in flowchart design. This तो ये रेक्टेंगल की तरह है. स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, इनपुट एंड आउटपुट के लिए, लाइन्स एंड एरोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड कंट्रोल. ओके. कनेक्टर सर्कल में प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस एंड दिस कमेंट्स. ठीक है. एडिशनल सिम्बल्स. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंट द फ्लो चार्ट. सो स्टार्ट एंड एंड के लिए ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है. देन रीड इनपुट एंड आउटपुट के लिए फॉर दिस एंड सम प्रिंट एंड स्टॉप. The flow chart of example, this is a shown low start, read number, input and output, reading the number. ठीक है. स्टार्ट और एंड सेम यही होता है रेक्टेंगुलर में. सेम स्टार्ट एंड एंड का डायग्राम. ठीक है. ये ऐसे बन रहा है. ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए है. आई इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बोल रहा है, प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शंस. ओके. दिस इज डिनोट बाय प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन. एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ डूइंग हियर. इंस्ट्रक्शन दे रहा है. ठीक है. एंड दिस इज अगेन एरो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंट फैक्ट एंड स्टॉप. ओके. the flowchart for example shown here is something like this. डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए. ओके. दिस डन. डिफरेंस बिटवीन फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिदम समझ में आ गया. कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ डेटा वैल्यूज. ओके. सजेशन फैक्सिलेट द सॉल्विंग प्रॉब्लम. ड्रॉ द एल्गोरिदम फ्लोचार्ट टू क्यूब रूट ऑफ द. ये बनाना है. अच्छा. ठीक है. प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है.
A language is used for communication. If two people don't speak the same language, a translator helps them to understand each other. Okay. In the same way, computer language lets a user communicate with computer. The user's language is different from what the computer understands. So a translator, compiler, which is compiler here, C में is needed. Computer language also follow grammar rules, correct syntax. This unit introduced the basics of C programming. To solve a problem, a computer needs clear instruction written step by step. This is called an algorithm. A flowchart is a visual way to show these steps. Algorithms are written using programming language, which becomes computer programs. Programming language help people use computers without Programming language help people use computer without knowing the internal details. These are often machine independent, meaning they work on different computers. There are two types of programming language: low level language and high level language. Based on computers hardware, low level, based on computer hardware, hard to learn and use, machine dependent, different for different computers, give faster performance. Example: machine language, assembly language use short codes called mnemonics, something kind of, ठीक है, unable to pronounce this word. High level language, easy to learn and understand. Okay, high level is easy to learn and understand. The low level is based on the computer, the hard to learn. It's hard to learn. Used to solve problem easily and simple. Example: basic Pascal. These need to be translated to machine language using the compiler or translator. History of C programming. C was developed by 1997 at AT&T Bell Labs, USA by Dennis Ritchie. It gives more control over input and output than language like Pascal. Background development में अगर देखें तो एक मिनट पहले इधर देख लेते हैं. Low level language and high level language correct है. Okay, C programming language. A kind of introduction about C programming language यहाँ पे. History of programming language. It was 1997 Bell Labs, USA by Dennis Ritchie. Background development. In the 1960s, many languages were created for a specific use. This is for business and this is for scientifics. People wants one general purpose language like this was created, but it was too complex and not widely used. Okay. Then came CLR from Cambridge University, but it had too many features. This is a simple version, was developed by Martin Richard, but it was too limited. B language developed by Ken Thompson was another version, but still not enough. Finally, Dennis Ritchie took feature from B and BCPL, added new ones and created C. Okay. It was first used on Unix system with this computer. Standardization. At first, C had no official standard and different versions had differences. In 1983, ANSI, American National Standard Institute, created a standard version of C. Salient feature of C. What is salient feature of this is? Seems कि ये पूछ सकता है, लग रहा है ऐसा. हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग तो ये तो कॉमन है, छोड़ो. साइलेंट फीचर ऑफ सी क्या है देखते हैं ज़रा. सी इज़ अ जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दिस इज़ कॉल्ड अ मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज C is a general purpose structure programming language. It is called a middle level language because it combines feature of low level and high level. Okay. C is a general purpose structure programming language. It is called a middle level language because it combines feature of low level machine oriented or high level language.
It offers programming efficiency and machine level control. C lets you work with bits, bytes and memory address. C program are portable, meaning they can run on different machine. Structured language. C is structured like this and this. In a structured language, the program is divided into modules. This makes debugging, testing and maintenance easier. C supports control structure, okay, like while, do while. Data structure like array, file, struct क्या है पता नहीं, etc. The basic unit of a C program is a function, a small reusable block of code. A structure of C. चलो अच्छा है, समझ में तो आ रहा है ये थोड़ा बहुत. Structure of a program. Let's go with the structure of a C program. To solve any problem in C, you need to decide the output you want, identify the input needed, write the steps to get the output from the input. Every programming language, including C, follows a specific rule called syntax. Correct. Every programming language, including C, follows a specific rule called syntax. C is case sensitive. For example, main in a capital or small main are not the same, they are different. ठीक है. Every C program is made up of one or more functions. C function then must be in every language. Every program is main function. This is the first function that run when the program start. ठीक है. So main function is the first function that run when the program start. It explains what the program will do. Even though main is not a C keyword, you cannot use it as a variable name. Example. Okay. कहाँ गया? तो क्या है, इंक्लूड studio.h की हेडर फाइल है मेन एंड प्रिंट. मेन फंक्शन के अंदर जो प्रिंट करवाना है वो प्रिंट विच इज़ आउटपुट. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम ये रहा. डन. ये समझ में आ गया. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिस तरह से ये हैज़ इंक्लूड स्टूडियो ये हेडर फाइल है. उसके बाद मेन फंक्शन जैसे कि बोला है कि मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है. उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट एफ करके लिखना है जो कि आउटपुट देगा. मतलब प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो भी ये स्ट्रिंग में है ना वो जस्ट प्रिंट करेगा. Main is the starting point of every C program. The program begin execution here. So main, this part, this from main here to here. Yeah. It is needed to use printf and other standard function. Okay. Any line starting with has is called a preprocessor directives. It is handled before actual code execution. Curly bracket mark the beginning and end of the block of the code. Okay, curly bracket mark the end and beginning of a code like a function or loop. Each statement ends with the semicolon, correct, which tells the compiler the end of that command. Printf this displays the message inside the quotes के अंदर जो है वो डिस्प्ले करेगा. /n is a new line character that moves the cursor to the next line after printing. Okay.
ठीक है। बाकी इस लाइन के बाद आगे जो भी प्रिंट होगा वो नीचे लाइन में प्रिंट होगा, इसलिए ये स्लैश एन ऐसे डालते हैं। दिस इज़ यूज फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर दैट मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। कमेंट्स आर बिटवीन दिस एंड दिस साइन, दे आर नॉट एक्सक्लूडेड एंड आर ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। ओके, सो तो कमेंट के अंदर जो लिखेंगे वो हम लोग को शो तो नहीं करेगा प्रोग्राम में, बस कैसे करके रखने, बस इस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखते हैं, जो कि डेवलपर आता है। और बहुत ह्यूज लाइन ऑफ कोड रहने से कोई भी दूसरे डेवलपर विल नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड कि विच प्रोग्राम इज़ रिटन, तो उसके लिए कमेंट यूज़ होता है। राइटिंग अ सी प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये एक बार देखते चलते हैं क्वेश्चंस पे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज ऑन अ स्क्रीन, तो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वो तो रहेगा ही रहेगा, हेडर फाइल है। ओके ओके ओके, देन मेन फंक्शन एंड प्रिंट जो भी है वो हो जाएगा, करेक्ट, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डेवलप एन एल्गोरिदम फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम टू एड टू नंबर्स लाइक स्टार्ट, इनपुट द टू नंबर, कैलकुलेट द सम, स्टोर द वैल्यू इन द सम, डिस्प्ले द रिजल्ट एंड स्टॉप। सेम नेक्स्ट। अच्छा, मतलब ये इज एल्गोरिदम, डेवलप एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर को ऐड करने का एल्गोरिदम लिखना है और फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है। तो एल्गोरिदम इज़ काइंड ऑफ सूडो लाइन ऑफ कोड, और उसका फ्लो चार्ट इज समथिंग काइंड, स्टार्ट एंड स्टॉप का तो कुछ और था। ठीक है, ओके। अब प्रोग्राम भी इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन फंक्शन, उसके अंदर ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल है, मेन फंक्शन अन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड एंड, जो भी होगा उसका अंदर होगा। इंट इंटीजर ए एंड बी कॉमा सम, एक लाइन में वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया। ओके, ए बी और सम, ए बी एंड सम। ओके, प्रिंट एफ line, this is for new line, and enter the values for a and b colon this, ये प्रिंट होगा। स्कैन एफ का यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल में डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, असाइन नहीं किए हैं। तो यूज़र से जो हम लोग को मिलेगा, यूज़र जो भी सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे जो भी हम लोग डालेंगे वो स्कैन एफ इसमें चला जाएगा। ये एक आइडेंटिफायर है, जो भी लेंगे उसके लिए 2 बार, क्योंकि 2 ए एंड बी लेंगे, ठीक है, एंड ए एंड बी। उसके बाद ए एंड बी जो भी रहेगा सम में आ जाएगा, उसका ऐड होकर वो सम में असाइन हो जाएगा उसका वैल्यू। और प्रिंट द सम इज़ दिस, और जो सम में आया रहेगा जो भी, द सम इज़, ठीक है, ये क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है तो ये एज इट इज प्रिंट होगा, द सम इज़, और यहाँ पे सम का यहाँ पे कॉमा के साथ वैल्यू आएगा, क्योंकि कॉमा दिया है, सेपरेट किया है, ये वेरिएबल का नेम है जो कि सम है, ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, अच्छा खासा भी एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करके लिखना भी पड़ेगा, तो ही तो मार्क्स देगा, ऐसे थोड़ी ना मार्क्स देगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइटिंग अ प्रोग्राम। सी प्रोग्राम कैन भी, अच्छा यहाँ से देखते हैं राइटिंग अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? डॉस एंड यूनिक्स के बारे में। राइटिंग अ सी प्रोग्राम, A C program can run on platform like DOS and Unix. A C program are saved with the .c file extension like testprogress.c.
एक्सटेंशन शुड बी .c होना चाहिए. नेम इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको जो देना है वो दे सकते हैं. In DOS, using text editor, you can type your program using any text editor like edit. ठीक है. Example, this is command opens this file in the edit editor. Edit editor. Okay. In Turbo C, using its own editor, Turbo C has built-in editor. To open it, run the Turbo C executable. Even this tc.exe, the Turbo C editor you find in the bin folder of a Turbo C directory. You can type your program there and save it using the menu. अच्छा, the file will automatically be saved in .c extension. In Unix, using text editor, a C program use .c extension. In Unix, you can use editor like vi, emacs and xedit. Explain the vi, vim editor, vi editor kind of. These editors are also used to modify the program later. Compiling a C program, ये रहा. देख लेते हैं डायग्राम. हाई लेवल मशीन लैंग्वेज टू ट्रांसलेटर्स को कंपाइल करता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में. ठीक. आफ्टर राइटिंग सी प्रोग्राम यू सेव इट विद द सी एक्सटेंशन. दिस सेव्ड प्रोग्राम इज हाई लेवल लैंग्वेज which human can read, but computers can't understand high level language directly. What happens next? The program needs to be converted into machine language which computer understand. So compiling a program. After writing a C program, you save it into the C extension. This saved program in a high level language which human can read, but computers can't understand high level language directly. What happens next? The program need to be converted into machine language which the computer understand. The computer needs to convert it into a machine language which the computer understand. The conversion is done by a software called compiler. हाई लेवल लैंग्वेज को ह्यूमन ही समझ सकते, ह्यूमन कैन रीड, और द प्रोग्राम नीड्स टू कन्वर्ट द मशीन लैंग्वेज द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर समझे. दिस कन्वर्सन इज डन बाय अ सॉफ्टवेयर विच इज़ कॉल्ड कंपाइलर. सी एंड कंपाइलर. ओके, कंपाइलर्स का रोल क्या है? It takes the source code, your C file, and translates it into object code, means machine language. If your program has no syntax error, the compiler will produce the object code. If there are error in the code, the compiler will show that error or won't generate object code. High level translator used to convert it into machine language program which is understood by computer only. Next, the C compiler. Okay. The C compiler. Once you have written a C program, you need to compile it before running it. The method depends on the platform you are using. Okay, so when you written a C program, you need to compile it before running it. This method depends on the platform you are using. On Unix platform, if the program is saved in this compile cc test progress C, this creates an executable file name A. If you want to name the output file something, this क्या बोल रहा है इसको अच्छे समझते हैं. ऑन यूनिक्स प्लेटफॉर्म, इफ़ योर प्रोग्राम इज सेव्ड एज दिस कंपाइल बाय ट्राइंग दिस क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम
in DOS platform using Turbo C. Turbo C gives a menu option for compiling. If your program is correct, it will produce an object file like this. If there are syntax error, they will be shown the screen and no object file will be created. Debugging, fixing the error in the program file before compiling again, it's called debugging. What is debugging? Fixing the error in the program before compiling again, it called debugging. Syntax and semantic error. Just like every language has grammar rule, English C also has grammar. C also has a rule called syntax. A program written in C must follow these rules. Okay, just like every language has grammar rule, C also has rule called syntax. A program written in C must follow these rules. Syntax error happens when the rule of the language are broken. Example, in English, writing Syam is playing with a ball is a wrong because commas are used incorrectly. Yes, correct. Similarly, in C, if you write code with wrong punctuation, misspelled keyword or wrong structure, it is a syntax error. When you compile the program, the compiler checks for syntax error. If it finds any, it shows error message with a line number, so you can correct them. So you लाइन नंबर के साथ एरर आता है तो उस लाइन नंबर को पढ़ के जहाँ उस लाइन नंबर में जो कोड लिखा है वहाँ पे जो भी गलत होगा उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं. दिस ओनली हैपन विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स एरर. Link and run the C program. After you compile your C program, the next step is linking. Okay. Where is linking? Link and run the C program. अच्छा, ठीक है. After you compile your C program, the next step is linking. Compilation creates a file with the extension .obj, but this file cannot be run yet. This because your code might use a function from C standard library like printf, which are not part of your program. Once again, that's because your code might use functions from C standard library like printf, which is not part of your language. Linking is the process where the linker connects your code with the code from C standard library. The linker takes your compiled file and the standard library function and joins them into a complete program. The final output is an executable file.exe which you can run now. Running a C program using the menu in Turbo C DOS. Running a C program using the menu in Turbo C DOS. When using Turbo C, an older C programming tool in DOS, a menu appears on the screen with options to help you run your program. Here's what the menu option do. समझ नहीं आया, इसको फिर से समझना पड़ेगा. Running a C program using the menu in Turbo C. When using Turbo C, an older C programming tool in DOS, a menu appears on the screen with options to help you run the program. Link. After compiling your program, the option link to connect it with library function this does both compiling and linking in one step. This option runs the program and shows the result. Once you run the program, to see the output, you must switch to the user screen window, a separate screen in Turbo C that displays your program's output. Run from an executable file.
Once a C program is compiled and linked, it creates an executable file with .exe and extension in DOS. This file can be run directly. On Unix, there is a tool called make. It helps compile and link complex program, usually using configuration called makefile. For a single file, you can just type make this in DOS. Skipping this part. linked errors okay, ठीक है. Sometimes a C program compiles successfully but still does not produce a executable file. This happened due to linker's error. Sometimes a C program compiles successfully, no syntax error, but still does not produce a executable file. This happened due to linker error. Why linker error happen? Your program might use a function that is declared in the header file like math.h, but its actual file code is missing from the standard library. Because this compiler only checks the header file for the function's declaration, it doesn't show a compile time error. Your program might use a function that is declared in the header file, but this is actual object code is missing from the standard library. Because the compiler once checked the header file for the function's declaration, this doesn't show a compile time error. But during linking, the linkers can't find the actual function's definition in the library, so it shows a linker error. To successfully create the executable file, you must fix this linker error. Logical runtime error. Once a program is compiled and linked successfully, we can execute it. When they run the program, these things happen: correct output, wrong output, abnormal termination. The program runs and gives the right result. This means this code is correct. This program runs but gives the wrong result. This is due to a logical error. Correct output, the program runs and gives the right result. This means the code is correct. The computer runs but gives the wrong error. This due to logical error. Abnormal termination, the program stops unexpectedly while running. This is due to runtime error. Logical error, these occurs when the logic or steps in your code is incorrect even if the syntax is right. These occur when the logic and step in your code is incorrect even if the syntax is correct. For example, you are calculating the average of the number, writing the wrong formula, the program will give the wrong result. Logical error doesn't show any message, so they are hardest to detect. Debugging is the process of finding and fixing error in the program. It involves checking the program step by step and looking at output after each part. In Turbo C, a tool called Tracker helps make debugging easier by letting you track the flow of a program. Okay. Write a C program to compute the average of 3 numbers. Program to average number include studio.h main आ जाएगा. main का curly bracket parenthesis open and close and curly bracket. int a b c, these are the variables. a is equal to this, b is this, c is this. sum ए बी सी का सम में हो गया. एवरेज निकालेंगे. टोटल नंबर आज 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये एवरेज निकल आएगा. एंड दिस इज द स्पेसिफायर. ये देना पड़ेगा, ये नहीं देंगे तो रहेगा. दिस इज एंड ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन मैटर्स. ओके, सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस इसके बाद आ रहा है. अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. ठीक है, देखते हैं इसको भी. राइट अ प्रोग्राम टू डिवाइड अ सम ऑफ 2 नंबर बाय देयर डिफरेंस. ओके, प्रोग्राम टू डिवाइड द सम. दिस इज कमेंट फॉर व्हाट? टू टेलिंग कि आगे का प्रोग्राम बेस्ड ऑन विच कॉन्टेक्स्ट.
include studio.h main parenthesis and curly bracket open and close, inside there is everything. इंटीजर 2 नंबर, यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर का बात कर रहा है. इंट ए एंड बी, ठीक है, एंड फ्लोट सी, ए एंड बी 10 10, सी इज इक्वल टू, सी में असाइन हो रहा है ए प्लस बी बाई डिवाइड सम. क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू डिवाइड सम ऑफ 2 नंबर, डिवाइड सम ऑफ 2 नंबर बाय देयर डिफरेंस. डिफरेंस के साथ सम ऑफ 2 नंबर डिवाइड कर रहे हैं एंड जो सी है उसको प्रिंट करवाना है यहाँ पे, ठीक है. ये लाइन ब्रेक करेगा सेकंड लाइन में, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, ये सेकंड लाइन में करेगा. एंड अगेन दी इन्फॉर्मेशन, चलो पढ़ के देखते हैं कि इन्होंने कैसे बोलता है. दी अवर प्रोग्राम विल कंपाइल एंड लिंक सक्सेसफुली, इट विल एग्जीक्यूट टिल द फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एंड वी विल गेट द मैसेज इन द स्टेटमेंट एंड सून एज द टेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड वी गेट अ रन टाइम एरर डिवाइड बाई 0 एंड द program has such kind of error or runtime error. अच्छा, ये एक पढ़ के देखते हैं. गोल, बेक अ केक, वाह, बेक अ केक जस्ट लाइक राइटिंग अ सी प्रोग्राम. Write a C program. You write down a cake recipe on a paper. Programming equivalent, you write C code using a text editor. Compile the program. You read the recipe and check it makes sense. No missing steps, proper ingredients. Programming equivalent, the compiler checks your code for syntax error. Debug syntax error if any. Save and recompile. Real life example, you realize you wrote add egg after baking. Wrong step. So you correct the recipe and reread it. Programming, you fix the syntax error and recompile the program. Okay, link the program. Real life, you gather tools like the oven, ball with this things you didn't mention in your recipe but are needed. Programming equivalent, the linker concepts your program will extend it to like standard function in studio.h. Okay, execute the program. Real life, you actually bake the cake, means you run your compile and link C program. Test and verify the result. Real life, you taste the cake, it's sweet and fluffy. Success, it's salty. If it's salty and hard, something went wrong. Programming equivalent, you check if the output is correct. If not, you might have a logical error to fix it. Summary, write code, write the recipe, compile, check if the recipe makes sense, debug, fix recipe mistakes, link, gather tools like oven and all, execute, bake the cake, test and verify, taste the cake. Very good explanation. बहुत अच्छा explanation था ये. For the new learners, जो पहले कुछ भी प्रोग्रामिंग का पढ़ा नहीं होगा, उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा. ओके, ये क्या था? डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस, उसी का डायग्राम है. तो कैसा है? राइट अ सी प्रोग्राम, कंपाइल, डिबग, लिंक द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, टेस्ट एंड वेरीफाई. द सेम विच आई यहाँ पे देखे. ओके, सो और है क्या? नहीं, इसमें क्वेश्चन कैसा है? राइट द एक्सटेंशन ऑफ जीरो फाइल, need linking. Why is it need linking? There is the correct logical way. बस यहाँ पे सॉल्यूशन सेट है. ओके, यूनिट 1 तो हो गया. अब यूनिट 2 करेंगे बाद में. नेक्स्ट